today we are going to begin with the lesson number 11 of your class 4 English grammar, that is adjectives, qualitative, quantitative and demonstrative. So let's begin with this lesson. Adjectives क्या होते हैं? They are an adjective is a word that modifies a noun or pronoun. ये वो word होते हैं जो modify करते हैं इसको noun को और pronoun को. So it describes the noun pronoun in a sentence. ये noun और pronoun को describe करते हैं एक sentence में. They help us to learn more about a noun pronoun by describing it. हम ज़्यादा learn कर पाते हैं noun और pronoun के बारे में जब उनको describe कर देते हैं. Like a fat cat. कैसी cat? Fat cat met and or sat on a mat. Manu has acted in many plays. कितने plays? Many plays. This poem is written by Twinkle. Demonstrate कर रहा है ना this poem. So in sentence one, fat tells what kind, किस तरीके की. Many tells the number of plays. This points the poem. Poise को point कर रहा है, poem को point कर रहा है. Depending on what they tell us about a noun or pronoun, they qualify. Adjectives are into many kinds. बहुत सारी kinds में qualify करते हैं. First one is qualitative, जिसमें quality पता चलती है कि किस तरीके से, कि they answer the question how. So an adjective would which describes or give information quality, जो information describe करती है, information देता है हमें quality के बारे में of a noun or pronoun is called qualitative adjective. इसे हम क्या कहते हैं? Qualitative adjective कहते हैं. To find out whether an adjective is qualitative or not, अगर हमें पता लगना है कि adjective qualitative है या नहीं, हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं? What kind, किस तरीके का है person or thing. So if the adjective gives us an answer, the quantitative. So if अगर हमें adjective answer दे देता है तो क्या है? Qualitative adjective होता है. Like what kind of car? A red color. What kind of boy? A happy boy. What kind of man? A tall man. What kind of snake? A poisonous snake. So red, happy, tall, poisonous क्या है आपके? ये बताते हैं कि what kind of thing is or a person is. So such adjectives are called qualitative adjectives. इन adjectives को क्या कह देते हैं हम? Qualitative adjectives कह देते हैं. Now quantitative adjectives क्या होते हैं? An adjective which describe the quantity or how many or how much. क्या describe करते हैं? Quantity describe करते हैं या कितना या how many या how much something is need is called qualitative. It's called quantitative adjective, जो हमें quantity बता देते हैं कि कितना है, इसको हम quantitative adjective कहते हैं. Like to find out whether an adjective is quantitative or not, we ask the question how many or how much. Like 6 balloons, 4 cars, much food to eat. कितना? So each of these adjectives 6, 4, much tell us how many or how much a thing is. ये हमें बता दें कि कितनी कोई चीज है. So such adjectives are known as quantitative adjectives. इनको क्या कहते हैं? Quantitative adjectives कहते हैं. So a quantitative adjective may mention a definite number. एक definite number को mention करती है और indefinite number को. So there were 40 people in that bus. कितने people? 40 people. I have a great amount of money. Great amount of money. So definitive. So definite ये क्या है? Great क्या indefinite है? 40 क्या definite है? Now demonstrative adjectives क्या होता है? This, that, these, those. So the adjectives which are used to point out or to draw our attention. मतलब point out करते हैं, हमारी attention draw करते हैं तो certain person or things, certain person या फिर चीजों के लिए उनको क्या कहते हैं? हम demonstrative adjectives कह देते हैं. Now this grammar book is mine. This जिसको हम touch कर सकते हैं वो क्या है? This है. These letters must be posted immediately. These मतलब जो एक से ज्यादा होता है प्लूरल के लिए हम these यूज कर सकते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं. Please tell those students not to make so much of noise. Those मतलब जो दूर होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, far away. I have never seen that person before. That जिसको हम टच नहीं कर सकते, single. Those प्लूरल के लिए और these भी प्लूरल के लिए, this और that हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. The above sentence, the word this, that, these, those are demonstrative adjectives. ये क्या आपके demonstrative adjectives हैं? So this and that are used before singular nouns. ये singular noun से पहले यूज होते हैं
और these and those are used before plural nouns, और these और those plural nouns से पहले यूज होते हैं. Formation of comparative and superlative, comparison of adjectives. कैसे comparison होता है, कैसे फॉर्म होते हैं, रूल्स क्या होते हैं पॉजिटिव के, सुपर कंपैरेटिव के, सुपरलेटिव के. Most adjectives formed है comparative by er and superlative by est. कंपैरेटिव में er लग जाता है, सुपरलेटिव में est लगता है. लाइक कोल्ड है, er लग के कोल्डर, कंपैरेटिव हो गया, est लग जाएगा, कोल्डेस्ट सुपरलेटिव हो जाएगा. Warm, warmer, warmest, young, younger, youngest. Now if the positive degree ends in e, अगर आपकी positive degree e से end कर रही है, आपको r लगाना है comparative में, st लगाना है superlative में. So nice, nicer, nicest, large, larger, largest, fine, finer, finest. Now when the adjective is a word, जब आपका adjective क्या एक word है of one syllable and has single consonant at the end, और single consonant होता है उसके end में, then the constant is double. जो उसका constant होता है double हो जाता है er लग के और est लग के positive degree में. Like hot, आपका जो p है double हो जाएगा hotter, hottest, big, bigger, biggest, thin, thinner, thinnest. When the adjective ends in y, जब आपका adjective किससे end कर रहा होता है, y से end कर रहा होता है, तो y आप किस में चेंज कर देते हो, I में, और सुपरलेटिव कंपैरेटिव में er लग जाता है और est आपका सुपरलेटिव में लग जाता है. लाइक हैप्पी, y का क्या हो गया, I हो गया, happier, happiest, tiny, tinier, tiniest, lucky, luckier, luckiest. Now with longer adjectives having two or more syllables, जिनमें दो से ज्यादा syllables होते हैं, more हम लगाते हैं comparative में, most लगा देते हैं हम superlative में. लाइक ब्यूटीफुल, more beautiful, most beautiful, expensive, more expensive, most expensive, interesting, more interesting, most interesting. Now some adjectives form their comparative and superlative in a different way में form होते हैं, like bad, worse, worst, little, less, least, good, better, best. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.